Before watching the video, please subscribe the channel. Press this subscribe red button. In today's class, we will learn about the distance formula of coordinate geometry. तो आज के क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या है. डिस्टेंस फार्मूला is actually the formula that is being used to find out the distance between two points on a graph. तो डिस्टेंस ढूंढने के लिए दो पॉइंट्स की डिस्टेंस ढूंढने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला. जैसे मैं इस पे आपको सिखाता हूँ. यहाँ पर एक पॉइंट है Q एंड यहाँ पर एक पॉइंट है P. If we want to know the distance between P and Q, इस P and Q को डिस्टेंस निकालने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला. तो इस डिस्टेंस फार्मूला को जब हम यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद हमारे पास easily distance between two points that's equal to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. तो ये कैसे है, ये क्या है, ये कहाँ से आता है. तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है हमारा ग्राफ. तो ये है डिस्टेंस फार्मूला. df is distance formula under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. सपोज अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा करता हूँ, दिस इज पॉइंट P. I will name this point P and I will dot another point here at that point. This is point Q. We know that in a graph, this is x-axis line. The positive values are from 0 to right hand side and negative values are 0 to left hand side of this x-axis line. Similarly, y-axis, this is positive numbers of values of y-axis here and negative values of y-axis here. Now, यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स डॉट किए डाल दिए इस ग्राफ पे P and Q. We want to know the distance between P and Q. तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं P and Q को, I will join these two points. तो if we are required to find out distance between P and Q, in this case we use the distance formula. कैसे? Here, if I will draw another line from P to this file, it means this P has x-axis coordinate 5 and from this P I will draw a straight line on y-axis, y-axis, that is, it means that this P has y-axis coordinate 4. I will write down here in brackets. It means here these red color lines shows us the two coordinates of point P. इन सुर्ख लाइन से हमें पता चला कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है. x कोऑर्डिनेट इसका 5 है and y coordinate is 4. Similarly, I will also show you the two coordinates of point Q. This is Q. From this Q, we will draw a line to x-axis. It means one coordinate is 2. X-axis coordinate is 2 of point Q and I will draw another line to y-axis. It means this point Q has x-axis coordinate 2 and y coordinate also 2. I will write down here.
तो हमने देखा the point P has coordinate 5 and 4 and point Q has coordinates 2 and 2. 5 means the x-axis coordinate, x-axis coordinate, and 4 means y-axis coordinate. It means I will write down here. I will name this 5 as x1. x1 means x-axis coordinate and y as y1. मैं इनका नाम रखता हूँ x1 and y1 means point P के x coordinate and y coordinate. Similarly, I will name this Q coordinates as x2 and y2. तो ये आपको समझ आया होगा. 2 2 means x-axis coordinate and y-axis coordinate. ये 2 2 x2 y2 x1 y1. तो we are required to find out the distance between P and Q. हमें चाहिए P and Q की डिस्टेंस क्या है. तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा here, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ से मैं एक इस Q से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा करता हूँ, इस पॉइंट तक. तो वी कैन इजिली फाइंड आउट. मैं इसको नाम रख सकता हूं यहां पर पी क्यू आर. पी क्यू आर. तो अगर इफ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, दिस क्यू आर, we can easily find out this QR, that is 5 minus 2, that is 3 units. QR की distance 3 units है. Similarly, if we are required to find out the distance between PR, इस PR line तक की distance क्या है, we can easily find out this PR distance. जब हम सीधे इस पे जाएंगे y axis पे, it means 4 minus 2, that is 2 units. It means QR and PR, इन दो की डिस्टेंस हम निकालने में बहुत इजी है निकालने. बट इफ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ Q and P, distance means the length of these 2 points, it is difficult. In such cases, we use the formula that is called the distance formula. तो QP की डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं एक फार्मूला, that is distance formula. Now I will write down here the distance of QP. If I will use QP is equal to, distance formula is here, under root of. Now we can easily find out distance between P and Q by distance formula. यही हमारा distance formula. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square is equal to under root of x2. ये x2 क्या है, दिए पे x2, या आप ऐसे भी रख सकते हो, इसको भी नाम रख सकते हैं x2 x y2 x1 y1, या आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर x2 is 2 and x1 is 5 square plus y2 is 2, y1 is 4 square under root of. When we will square these two, we will get, it means यहाँ पर माइनस करेंगे -3 and -2 square 9 plus 4, -3 square is 9, -2 square is 4.
this is equal to under root 13. It means the distance between 2 points P and Q is under root of 30. This is the distance formula which has been taken from the Pythagoras theorem. If you will check here that PQR, this is actually a right triangle in which QR is base and PR is perpendicular. जब आप इसमें इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे Pythagoras theorem, you will get this x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This is the actually formula taken from the Pythagoras theorem. Here we find out the distance between 2 points Q and P, that is equal to under root 13. Under root 13 centimeter, meter or units. We can say units. Units means we don't know unit here. तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला. तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो आपको समझ आया होगा. This was our distance formula which you may have understood here. How can we find out the distance between 2 points? Now here I explain you and find out the distance between 2 points P and Q by the formula of distance formula. Now similarly, if I will draw another 2 points on a graph, that is P and Q here. This is P and this is Q. Suppose these 2 points are required to you to find out. If we are required to find out the distance between these 2 points, how can we find out? The shortcut is here. You first find out x1 and y1 and then x2 and y2. इसका शॉर्टकट ये है कि सिर्फ x1 y1 निकालो. ये क्या यहाँ पर क्या है, एंड y1 y2 एंड x2 निकालिए तो आप इजीली निकाल सकते हो. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका x2 y2 कैसे निकलेगा. इफ यू विल ड्रॉ पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस, from this to this line, this is our axis coordinate and this is our y-axis coordinate, and this is here y-axis coordinate and this is x-axis coordinate. It means this is x1 and this is y1 and this is x1 x2 and this is y2. Similarly, in this graph, you can also easily find out here that this is our x1 and this is y1, and here this is x2 and this is y2. x1 y1, this is x2 and y2. It means हम जब पॉइंट्स इस पॉइंट से ड्रा करते हैं एक्सिस की तरफ लाइन, तो जहाँ से वो आ रहा है वही उसका x1 है. एक्सिस पे क्या है, तो if it is given in the question that 4 5, it means here is given our 2 coordinates, but if it is not given in the graph, in the question, the coordinates of a point, then we can find out the coordinates of point, and we will use the formula of distance formula and can easily find out the distance between 2 points. तो ये था एक साइड में एक कोऑर्डिनेट में था. तो यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ से यहाँ तक लाइन आ गई है, तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए सेम प्रोसीजर, एंड दिस आल्सो दिस फ्रॉम P to Q, इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर. बट द डिफरेंस इज हियर दैट x1 and y1, both of these two will be positive.
यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, लेकिन when you will find the coordinates of q, both of these two will be negative, but it will not affect your calculation either positive or negative. If you will put this positive and negative value in your formula x2 minus x1 square, there is square, it means if there is negative value it will square, it will again become positive, and if there is a positive value it will square, it will remain positive. तो कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे को यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू निकल रहा है या पॉजिटिव वैल्यू निकल रहा है. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन देयर विल बी one side coordinates of p both will be positive and coordinates of q will be positive and negative. X coordinate will be negative and y coordinate will be positive. So this was the brief about the distance formula. Now we will check in the book the brief about the distance formula. This is our distance formula. ये इसने यहाँ पर PQ is under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Now, by using this distance formula, this can be applied in many places in the mathematics. Here, this is a question example. A town town B is located 36 km east and 15 km north of the town A. There are two towns in a plan. ज़मीन पे दो towns हैं. एक town is located 36 km east and 15 km north of the town A. क्वेश्चन क्या है? तो एक टाउन दूसरे टाउन से नॉर्थ के साइड में 15 किलोमीटर एंड ईस्ट के साइड में 36 किलोमीटर. हमें क्या बताना है? हाउ वुड यू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट. इसको मेजर करने के बगैर आप किस तरह से इन टाउन्स की डिस्टेंस निकाल सकते हो? तो विदाउट एक्चुअल मेजर करने के बगैर, यस, वी कैन इजीली फाइंड आउट. We can easily find out this. This is same as at this point. This graphical line. This is one town P and this is another town Q. We can easily use this coordinate geometry, and after using the coordinate geometry, we can easily find out the distance between two towns from by using the distance formula QP. This was our distance formula, so that I have explained you in detail. Now you can repeat this by watching this class 4-5 times, and you can remember this easily for your further